class we had discussed meaning definitions discussions were also done. So here I'm present again with a revision class. First I will recap it, then after that we'll move further. Questions and answers related to this topic we have already done, and it is lying in videos on my channel. So I'm going to actually explain it because any topic, not only question answers are required, but also the explanation of the chapter is very important. So as you know that Arshdeep, good evening sir. Arshdeep from Gari. Okay, good evening beta, how are you? किवें हो तुसी ठीक हो? Good. So let's begin. शुरू करिए. Revision have पहले chapter दी discuss भी कर सकते हैं आप, right? So as I've already told you that political science is very important subject, and with the passage of time its meaning and subject matter has changed a lot, but little meaning is same. Politics or political is concerned with the activity that is related to power, rule and authority, or in according to traditional viewpoint, that is related to state and government. If we talk about the word political, it has been taken from, or politics word taken from Greek words polis, which means city, state. There is a difference between political science and politics. Political science is a subject and it is concerned with political principles, whereas politics is concerned with political activities that is going on in day-to-day life, and that state and government is very involved, right? So hope up to this it is clear to you. About the meaning and definition of political science, there are two kinds of views: traditional views and modern views. Traditional views include three things in its meaning, and main supporters are Gardner, Bluntschli, Paul, Janet, Seeley, Leacock, Willoughby, Gattel, and Lasky. And those three things are: they say that political science is study of state or concerned with state, political science is study of government, and political science is study of government and state, both. So these definitions we have already discussed. Shreef, बेटा समझ लग रहा है आपको जो मैं बोल रहा हूँ? Any doubt? If you have, you can question me, right? You can comment and question. आपको जो मैं बोल रहा हूँ समझ लग रहा है ना? You understand whatever I am speaking? Very good, very good. So these definitions we had done. First definition, remember one definition from this point, political science is concerned with state. So here he says, Gardner says political science begins and ends with the state. Political science is concerned with government. Here you remember the definition of Leacock. He says political science deals with government. And then we have third view, which says it is concerned with both state and government. Here you remember the definition of Democ. He says political science is concerned with state and its means and government. So the meaning and definition of political science according to modern viewpoint. Modern viewpoint include formal as well as informal organization that in any way is related to the things that influence this ability to struggle for power, use of influence and authority, of goods and services or values. So main supporters of modern viewpoints are Harold Laswell,
David Easton, Charles Merriam, Robert A. Dahl, George Catlin, D. E. Apter, Almond and Powell, and Herbert J. Spencer and Eric Crow. 2-3 definitions we will check from here. David Easton says political science is authoritative allocation of values. Robert A. Dahl says political science deals with power, rule, and authority. And lastly says political science is study of shaping and sharing of power. Alan R. Ball says politics is activity concerned with conflict, consensus, decision-making power, and authority. So this way, we see that scope of political science has expanded, where from traditional viewpoint it was related to state and government only. In current scenario, in modern time, we see that scope of political science has become wider. In brief, we can say that political science is concerned with the state and government and with the political activities of individuals living in the state that in any way influence the working of political institutions. So here we include those activities which are structural in the form and non-structural, formal and non-formal. Up to here, Arshdeep beta, it is clear up to here? आप अकेले हो तो अकेले लाइक कर दो क्लास को, राइट? और बताओ अब तक क्लियर रहा है जो मैंने कहा? मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, और अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे. आई एम श्योर, डैम श्योर अबाउट इट. If you're listening to me, like the class and share also. I understand people are not joining class because they have exam tomorrow. You have exam, English exam you have tomorrow. So I understand. If you want to ask anything in English after this class, you can ask. Good evening, Kumar sir. Good evening. How are you, bro? Hope all fine. So I'm taking a revision class. I understand the students are busy, so I'm taking it. If it doesn't matter how many students join, but I am doing revision for them, right? So we'll discuss now the scope of political science. Scope, as I've told you, from two viewpoints. One viewpoint is traditional, where the scope included state and government only. Sahil Kambos, beta, good evening, beta, good evening, welcome. And another is modern viewpoint, where subject of political science has been quite wider, right? And it has been changing with the passage of time, and it has become wide. Greek thinkers consider study of city-state to be the subject matter of political science, but modern modern states are nation-state, and so its functioning has grown, into many. So its scope has also become science. Aristotle described political science as the master science, right? And so let us do it in detail. The scope of political science is quite wider now, and first thing that it includes in its study is study of state. We study it is according to traditional viewpoint, political science is mainly concerned with the study of state. Okay, it studies the past of the state, present of the state, and the future of state. Second scope is study of the government, right? Government and its structures, different structures, form of the governments we study: parliamentary, presidential, for federal, unitary government, and democratic government, dictatorial government also. So the subject of political science, subject matter of political science is government also, its different organs also. These organs each other. Okay, next is study of international relation and international organization.
Study of international relations and international organizations. International relations, being nation states and political system or political individuals on international arena. International relations are there, as we cannot live in isolation, so we have different relations with different political systems or different countries here, to be very specific. So we have different economic, social, political, religious needs, and so as per those formed international relations, and we have made certain, so those international relations are regulated as per laws, and to interact properly we have formed certain international organizations also. Those international organizations are there to regulate the behavior of international persons, means states, right? Systems, a political system, different political system. Those international organizations are uh, United Nations, UNESCO, International Labour Organization, World Health Organization, World Bank, International Monetary Fund, SAARC, ASEAN, European Union, G8, G77. क्लियर नहीं आ रहा है बेटा? कोई गल नहीं, थोड़ा जरूर क्लियर कर देना हुआ तो होपफुली यू लिसनिंग टू मी एंड यू गेटिंग माय वॉइस क्लियर. आवाज़ सुन के भी समझ आ जाएगी, राइट? So this was study of international relations and international organization. Next is study of the behavior of the individual. Study of the behavior of the individual. Individual is not only a social being, but he is a political being also. He is a religious being also. He is a social being also. Economic being also. So, and he is central to all those activities that is going on in a state. So, protection of his interest, he makes various types of associations or organizations, right? He takes out processions, contests elections from governments also, so, and runs the administration also. So study of those behavioral individual is part of political science, which is activities. Okay बेटा, तो ये इंडिविजुअल की स्टडी करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, पोलिटिकल एक्टिविटीज़ आदमी परफॉर्म करता है, रिलीजियस एक्टिविटीज़, तो ये वो बिहेवियर को स्टडी करता है जो कि पोलिटिकल साइंस से कंसर्न है, पोलिटिकल से रिलेटेड है, जैसे कि वोट डालना, इलेक्शन लड़ना, एसोसिएशन बनाना, पार्टीज बनानी, गवर्नमेंट फॉर्म करना, ये सारे, तो यहाँ पे इस तरह के इंडिविजुअल की बिहेवियर की स्टडी होती है. देन वी हैव स्टडी ऑफ पोलिटिकल आइडियोलॉजीज. पूरी दुनिया में अलग अलग आइडियोलॉजी, वी हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज थ्रू आउट द वर्ल्ड. देयर आर मेनी आइडियोलॉजीज एंड विद द पैसेज ऑफ द टाइम आइडियोलॉजीज कीप्स ऑन बिल्डिंग एंड चेंजिंग, एंड those ideologies are the part of political behavior. These ideologies basically tell about the relationship between the state and political system. They also tell about the function of the states, also about the function of the states, about the states also. So there are a number of ideologies. बहुत सारे ideologies हैं: individualism, liberalism, उदारवाद, communism, सोशलिज्म, समाजवाद, फासिज्म, नाजिज्म, गांधीज्म, गांधी की आइडियोलॉजी कहते हैं. तो ये फॉर्म द स्कोप ऑफ पोलिटिकल साइंस. स्टडी ऑफ controversies and conflicts. Democracy is the political science is politics is concerned with some sort of competition, manipulations, right? He says that the resources of states are generally limited. ये हमें पता है, सबको पता है कि स्टेट जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और लिमिटेड स्टेट्स है, बट उसके वेरियस यूजेस होते हैं, और हर कोई मैक्सिमम रिसोर्सेज प्राप्त करना चाहता है, उसके ऊपर कैप्चर करना चाहता है, तो कंट्रोवर्सीज और कॉन्फ्लिक्ट होती है. तो पोलिटिकल साइंस कॉन्फ्लिक्ट एंड कंट्रोवर्सीज की भी स्टडी करता है. सो इट स्टडीज दोज कॉन्फ्लिक्ट एंड कंट्रोवर्सीज ऑल्सो.
that is to control the resources, as the resources are scarce, resources are limited. Study of decision making process. There are alternative solution to different problems, and out of those proper solution on to the process of this. See, the decision making process is a process where literally people who have been chosen to take decisions, right? So decisions can be for different purposes, to bring happiness in the society, to bring proper infrastructure, to eradicate poverty, illiteracy, and unemployment also. So, and for the development of the country, for the development of industries, for the development of agriculture also. So, it studies those decision-making policies also, which government brings for different purposes, and right. So political science is concerned with the process where there are their decision made, and to use different is to achieve these purposes, right? तो ये था स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग किस यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की स्टडी होती है डिफरेंट प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए डिसीजन लिया जाता है और वो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और उसकी स्टडी भी पॉलिटिकल साइंस करता है स्कोप में आता है राइट Let's move to the next point, that is study of authoritative allocation of values. Davidson कहते हैं कि politics is concerned with the authoritative allocations of values for society. It means क्या कभी authoritatively values are allocated for the society. वो rules and regulations बनाए जाते हैं जो कि Cecil Agarwal, good evening. Good evening, dear. Good evening. तो जो भी डिसीजन आते हैं अथॉरिटेटिव एलोकेशंस ऑफ वैल्यूज़ होती है उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है बिकॉज सिस्टम वो बनाती है ताकि हमारी लाइफ अच्छी हो सके और ये प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन की स्टडी ऑफ कंसेंसस एंड कोऑपरेशन कंसेंसस और कोऑपरेशन क्या होता है कोऑपरेशन होता है कंसेंसस होता है आम सहमति कोऑपरेशन होता है अगर सहमति नहीं बनी तो फिर भी कोऑपरेशन करके कैसे चलना आपस में मेल मिलाप करके कैसे चलना वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर वेयर इज डिसएग्रीमेंट जहाँ डिसएग्रीमेंट होगा और तो वहाँ पे कोऑपरेशन की या कंसेंसस बनाने की कोशिश जाएगी वेयर देयर इज डिसएग्रीमेंट देयर इज एग्रीमेंट ऑल्सो जहाँ पे किस बात पे सहमति आम सहमति नहीं हो सकती है डिसएग्रीमेंट होती है किसी पे सहमति होती है एंड देयर इज जहाँ पे एग्रीमेंट होती है वहाँ डिसएग्रीमेंट भी होती है एग्री ऑन द सेम सब्जेक्ट सभी तो ये ज़रूरी भी नहीं है और असहमति का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए तो लेकिन ये होता है कि जो सहमति या असहमति बनी है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ न कुछ हम प्रोसेस करते हैं जिसको कहते हैं कि आम सहमति बनाना तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर आम सहमति बनाने की कोशिश की जाती है फिर उसको कोऑपरेट करके एक दूसरे से उसको दूर किया जाता है बिकॉज ऑफ दिस टुडे पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस इज कंसिडर्ड बेटर यानी कि आम सहमति की तो ये उस सहमति को पढ़ता है और जो आपस में कोऑपरेशन करते हैं पॉलिटिकल बीइंग उसकी स्टडी भी करता है स्टडी ऑफ लीडरशिप की स्टडी करता है पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद स्टडी ऑफ लीडरशिप राइट क्या होता है कि लीडर्स कौन होते हैं लीडर्स वो होते हैं जो लोग किसी चीज़ को इनिशिएट करते हैं और आगे उस पर वर्क करके बेटरमेंट चाहते हैं खुद का सोसाइटी का समाज का देश का तो लीडरशिप इज़ बेसिकली एक्टिविटी ऑफ परसुएडिंग पीपल टू कोऑपरेट इन अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव और लीडरशिप वो लोग होते हैं जो कि मनाते हैं दूसरे लोगों को कैसे हम कोई अचीवमेंट कर सकते हैं इकट्ठे मिलकर ओके बेसिकली वो इकट्ठा करते हैं एग्रीगेट एंड आर्टिकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ द पीपल एंड ऑर्गेनाइज देम टू देयर तो लीडरशिप बड़ा अहम भूमिका निभाती है पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरह लोगों को इंटरेस्ट को इकट्ठा करके और लोगों को जो है किसी चीज़ को पाने के लिए मनाना है और कैसे कोऑपरेट करके
जो एम्स एंड एम्बिशंस हैं उसको प्राप्त किए जा सकते हैं। तो लीडरशिप वो क्वालिटी है किसी आदमी की जो लोगों को अपने साथ लेकर चल सकते हैं बेसिकली। तो स्टडी ऑफ पोलिटिकल पार्टीज़ की स्टडी करना ही पोलिटिकल साइंस का एक स्कोप है, राइट। और पॉलिटिकल पार्टीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है डेमोक्रेसी में आज के ज़माने में, क्योंकि इतना बड़ा सभी नेशंस है, छोटे छोटे नेशन तो हैं नहीं, ऑल आर बिग नेशंस और सभी खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सो दे चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव। और इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू मेनली फंक्शनिंग होती है, और दे आर पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस स्कोप। स्टडी ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है कि कैसे चुनाव होगा, कब होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये इट इज़ included in electoral system. So in democratic system of people exercise political power through elected representatives. For choosing their representative they vote, and different method of elections are adopted for choosing them. Okay, so it studies that also, study of political influences, किसके पास कितना इन्फ्लुएंस है, राइट। सभी इन्फ्लुएंस प्राप्त करने के लिए हर कोई, पोलिटिकल पार्टीज हो, प्रेशर ग्रुप्स हो, इंटरेस्ट ग्रुप्स हो, लेबर यूनियन हो, स्टूडेंट्स टीचर्स यूनियन हो, कोई भी हो, वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। और किसके पास कितना इन्फ्लुएंस है पोलिटिकल सिस्टम, ये बड़ा मैटर करता है। तो हर कोई जो है गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना चाहता है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, राइट। सो दिस वे वी हियर इट इज़ part of scope of political influence, scope of political science, study of comparative government of politics. अलग अलग कंट्रीज में ने अलग अलग गवर्नमेंटल सिस्टम को अडॉप्ट किया, उसकी कंपैरेटिव स्टडी भी पोलिटिकल साइंस का हिस्सा, स्टडी ऑफ पोलिटिकल सिस्टम। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पोलिटिकल सिस्टम पोलिटिकल साइंस का ये हिस्सा है, पार्ट है, और इसने पोलिटिकल साइंस के स्कोप को बहुत वाइड कर दिया है। ओके, सो पोलिटिकल सिस्टम इसमें हैज़ मेड पोलिटिकल सिस्टम, ये इसमें स्ट्रक्चर जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉन फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या क्या है, और तो इस प्रकार ये दूसरे बिहेवियर को भी इसमें स्टडी करता है, यानी कि फुल फ्लेज पोलिटिकल सिस्टम को स्टडी करता है इसमें। स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं और जो हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है वो, और स्टेट जो है राइट्स देता है और ड्यूटीज़ भी लगाता है। तो इस तरह ये उन राइट्स एंड ड्यूटीज़ की भी स्टडी है जो एक पोलिटिकल सिस्टम में होता है, और राइट्स एंड ड्यूटीज़ से हमें पता चलता है कि उस वहाँ के लोग उनके परफॉर्मेंस से कैसे होंगे। तो ये भी इसके स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ इज पार्ट ऑफ पोलिटिकल साइंस को। देन स्टडी ऑफ पावर, इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी, किसके पास पावर है, कौन यूज़ करता है उसको, इस सब की स्टडी होता है। स्टडी ऑफ पोलिटिकल कल्चर, किस तरह का कल्चर, पोलिटिकल कल्चर इज composed of attitude, basically belief, emotions and value of society। तो कैसा कि कहाँ का है, किस किस इशू से लोग रिलेटेड हैं, और कैसे वो अपने आप को एक जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें अपने आप को शामिल करते हैं, उसके साथ एक मिक हो जाते हैं। तो ये भी इसका पार्ट है, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइज। इससे पहले थोड़ा सा और पॉलिटिकल कल्चर पर बात कर लेते हैं। हर एक देश का पॉलिटिकल कल्चर अब डिफरेंट होता है। हमारे देश में डिफरेंट है और यहाँ पे दूसरे देशों में कहीं पे शांतमय माहौल होता है, पॉलिटिकल कल्चर कहीं का साथ शांत होता है, कहीं पे थोड़ा सा डोमिनेटिंग होता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये कोशिश करती रहती है, पॉलिटिकल कल्चर से हमें पता लगता है कि वहाँ पे किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम होगा, और वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में भी पॉलिटिकल कल्चर बड़ा हेल्प करता है। तो इसलिए ये पॉलिटिकल साइंस के स्टडी का पार्ट है। देन स्टडी ऑफ बेसिक सोशलाइजेशन जो है एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, जिससे कि आपको पॉलिटिकल कल्चर में भर्ती करते हैं। ओके, तो सोशलाइजेशन प्रोसेस बाय विच पॉलिटिकल कल्चर आर मेंटेन्ड और चेंज, और ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो पॉलिटिकल कल्चर है वो उसको मेंटेन भी किया जाता है और उसको बदला भी जाता है। तो बेसिकली इससे लोगों की जो है सोशलाइजेशन होती है, लोगों के पास नॉलेज आती है कि पॉलिटिकल सिस्टम और
फॉर्मल नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और वो किस तरह से पड़ते हैं, दैट इज नोन एज सोशलाइजेशन। यहाँ पे एक बात, सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जैसे कि स्कूल में एक बच्चा आता है नया, तो टीचर उसको बाकी बच्चों से इंट्रोड्यूस करवा जाता है, उसको सोशलाइज किया जा रहा है ताकि वो दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल करे। तो इस तरह से पोलिटिकल सोशलाइजेशन जो है ये प्रोसेस है जिसके थ्रू लोगों को पोलिटिकल कल्चर के बारे में पता चलता है, और इससे पोलिटिकल कल्चर जो है मेंटेन भी किया जाते हैं और सोशलाइज चेंज भी किए जाते हैं, क्योंकि सोशलाइजेशन में कुछ चेंजेस अगर इंट्रोड्यूस कर देते हैं उस पोलिटिकल कल्चर लोगों का बदलना शुरू हो जाता है। स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम नेक्स्ट पॉइंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का मतलब है कि कीपिंग माइंड द ट्रेडिशंस नीड्स टारगेट फिक्स फॉर द फ्यूचर कंट्री। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का पार्ट बन जाता है, और हर एक कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम दूसरे देश से अलग होता है। राइट, स्टडी ऑफ लॉ। Rules and laws are actually basically made to run the administration, to run the government, to run the country properly. So those laws are studied which is there in the country, and it is part of the scope of political science. Then study of political thoughts, अलग अलग जो राइटर्स के विचार हैं पुराने राइटर्स के, फॉर एग्जांपल प्लेटो के, एरिस्टोटल के, हॉब्स लॉक, रूसो के, मैकियावेली के, ये अलग अलग थॉट्स हैं, उन्होंने विचार है, या फिर मार्क्स के, तो वो भी स्कोप में आता है पोलिटिकल साइंस के। इस तरह से scope of political science ends here. If you want to ask anything, just you are free to ask me the question. अगर कोई पॉइंट नहीं समझ लगा है तो हम उस पर दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। If you want to ask, please comment now. Yes, जो भी क्लास में कमेंट करो। ये नोट्स मैंने भेज दिया, मैं दोबारा से सेंड कर दूँ इसी को, ये PDF सेंड कर दूँ आपको, या पर्सनली आप मुझे कमेंट कर दो, तो व्हाट्सएप कर दो तो मैं उस पर भेज दूँगा ये। ठीक है बेटा, मिल जाएगा फिर ये। तो कल हम करेंगे सिग्निफिकेंस, मुझे व्हाट्सएप कर देना, आई विल सेंड यू। अगर छोटे नोट्स चाहिए बेटा ब्रीफ में, तो वो नोट्स आई विल हैव टू फाइंड, मेरे लेक्चर में तो है, मैंने इसके ऊपर ब्रीफ नोट्स बना के लेक्चर दिया था, बट वो नोट्स कहाँ पे है आई डोंट रिमेंबर। इससे ब्रीफ में ही मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, उस तरह से आप एक्सप्लेन करके लिखो तो बहुत अच्छा रहेगा, इट वुड बी बेटर। राइट, तो क्लास एंड करूं? राइट बेटा, अब आई एम गोइंग टू एंड द क्लास, देन सी यू टुमारो, बाय, टेक केयर, गुड बाय, टेक केयर।